All right, guys. Assalamu alaikum. Can I get a quick audio video check, please? All right. Thank you, Usman. How many students are recording the lecture? I guess Mohammed Usman, you are recording. And I believe Kulsum, you are recording as well. Kulsum, beta, can you acknowledge? All right. Thank you, Kulsum. Suleiman Momin, I believe तुम भी record कर रहे हो ना? All right. सही है Suleiman. So let all the students join in. फिर यहाँ start करता हूँ. I'll just wait for a couple of minutes more. Yes, Shiza. I'll start inshallah with gravitation today. Yes, I shall start with gravitation. Yes, Rania. Last वाली class के अंदर we concluded the working of circular motion.
ठीक है यार, I guess almost सारे students आ गए हैं. The rest of the students can join in later. ठीक है. We are in the previous class, we concluded with the working of circular motion. तो आज gravitation की working start कर लूं. Definition का काम पहले करा दूं. We'll then move on to the formulas. So the first working is a Newton's law of gravitation. पहले wordings follow कर लेना, फिर मैं mathematical equation form कर दूं. So according to Newton's law of gravitation, the gravitational force of attraction Fg between two-point masses is known to be directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. ठीक है, so according to Newton's law of gravitation, the gravitational force of attraction Fg between two-point masses is known to be directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. So diagrammatically, if the two-point masses are labeled as m1 and m2, and if these point masses are separated by a distance of r, then based on Newton's law of gravitation, the gravitational force is known to be directly proportional to the product of the two masses, so m1 times m2, and inversely proportional to the square of the distance between their centers. So this is how the law can be formulated. If you then remove the proportionality sign, so then you can introduce a constant. In this case, I'm denoting the constant by the term capital G. The result now works out to be G times m1 m2 upon r square, where capital G is a constant known as the universal gravitational constant. The value of G, which is a constant value, is 6.6 times 10 to the power of minus 11. वैल्यू एग्जाम्स के अंदर गिवन होती है, तो वो लर्न करने की जरूरत नहीं है. Having said that, if you make G the subject, तो आई गेस आप G के यूनिट्स फिगर आउट करके निकाल सकते हो. तो मैं साइड पे वर्किंग कर रहा हूं. If you make G the subject, you will end up getting this answer: force times r square divided by m1 times m2. So on the basis of this result, you can work out
the units of G. Force will be in newtons. R square, meter square, and m1 times m2, that should be kilogram to the power of -2. So the universal gravitational constant in this case is denoted by the symbol of capital G. Its value is fixed as 6.67 times 10 to the power of -11. Its units can be worked out as follows. So in this case, it is Newton meter square kg -2. And the formula works out to be as shown. Now moving on, जो नेक्स्ट चीज डिस्कस करनी है दैट इज विथ रिगार्ड्स टू किस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे. मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर रहा हूँ. अच्छा, वंस अगेन स्क्रीनशॉट्स वगैरह मत लेना. वंस आई एम डन विद द क्लास तो मैं अपलोड कर दूंगा. सो इन कंटिन्यूएशन नेक्स्ट चीज ये डिस्कस करनी है हाउ कैन वी अप्लाई the above result to calculate gravitational force between two bodies. तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसकी बेसिस पे डिस्कस कर लेते हैं. So let's suppose if you are asked to calculate the gravitational force between the Earth and a mass m of 1 kilogram, which is positioned on the surface of the Earth. Okay, so let's suppose if you are asked to calculate the gravitational force of attraction between the Earth and a mass m of 1 kilogram, which is positioned on the surface of the Earth. यार अहमद ने लिखा हुआ है सर फोर्स किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर नहीं होगा. अगर तुम्हें बेस यूनिट्स में लिखना हो अहमद, तो तुम फोर्स को रिमूव करके kg ms-2 लिख सकते हो. बट मेरा इंटेंशन बेस यूनिट्स में लिखने का नहीं था. बट इफ यू वांट टू राइट डाउन फोर्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, देन अहमद यू आर राइट, चेंज कर देना. ऑल राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा डायग्राम फॉलो कर लेते हैं. So in this case, you are asked to work out the gravitational force. पहले डायग्राम फॉलो कर लीजिएगा यार, इसी के साइड बाय साइड वर्किंग कर लेता हूँ. तो अर्थ आपके पास आ गया. मैं अर्थ के मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ सिंबॉलिकली. ओके, ऑब्जेक्ट के मास को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, which is 1 kilogram. And the question is asking us to calculate the gravitational force of Fg between the Earth and a mass m of 1 kilogram, which is positioned on the surface of the Earth. Here, in order to apply the formula, पहले देख लीजिएगा मैं फॉर्मूले को लिस्ट कैसे करता हूं और बाद में इसकी कैलकुलेशंस को फॉलो कर लीजिएगा. Here the gravitational force, if applied in this scenario, then the above formula can be written down as follows: capital G, capital M times small m, and the distance can be represented by the symbol of r square. मैं symbols की representation side पे करता जाऊं. So small m in this case represents the mass of the object.
वैल्यूज अभी प्रोवाइड कर दूंगा. कैपिटल M in this case represents the mass of the earth. And capital R in this case represents the radius of the earth. So provided that these values are given to you, you can apply the formula to calculate the value of the gravitational force. Numbers मैं आपको दे देता हूँ. Replace करके देख लेते हैं result क्या बनेगा. So small m is already provided to you in the question. 1 kilogram. Capital M, which is the mass of the earth. You would need this value, तो वो मैंने लिख दी है. Again, no need to remember this value. Questions के अंदर given होती है. And capital R, which in this case will represent the radius of the earth. मैं डायग्राम पे कैपिटल आर को इलिस्ट्रेट भी कर दूं. So if you were to plug in these values to see कि यार ग्रेविटेशनल फोर्स का अमाउंट आपका बनता कितना है, पहले देख लेते हैं कि यार ये वैल्यू कितनी आएगी. तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट, capital M for the mass of the earth, small m for the mass of the object, R in this case representing the radius of the earth. ठीक है, so the numbers provided to you, मैंने उन numbers को यहाँ पर imply कर लिया है. मैं 2SF पे लिख दूंगा, तो 9.77 को आयशा फिर चेंज कर दूंगा. So the value of the gravitational force in this scenario, 2SF पे लिख रहा हूँ, so it amounts to 9.8 newtons. Now do recognize that if I were to ask you look at this value to suggest an alternate name for gravitational force. So can you all recognize इस value की basis पर you should be in agreement that the alternate name that can be given to represent this value, मैं state कर रहा हूँ, could simply be the weight of the object. And for those of you who are wondering कि यार मैंने कैसे judge किया कि the gravitational force can alternately be referred to by the term weight of the object, तो simply जो O levels वाला formula था weight का apply करके देखते हैं. W is equal to mg. Let's try to calculate कि weight का आंसर कितना बनेगा. So for the object whose mass was 1 kilogram given to you, और g की वैल्यू आपको पता है, so kind of it's pretty obvious कि जो रिजल्ट आपका वेट का वर्कआउट करके बन रहा है, ये रिजल्ट आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के रिजल्ट के साथ एग्जैक्टली कंपैटिबल है. तो आई एम श्योर इसकी बेसिस पर you should be able to recognize the fact based on the above working, we can conclude that the gravitational force Fg experienced by the object
can alternately be referred to as the weight of the object. सही है. So अहमद ने लिखा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अहमद वर्डिंग में तो मुझे मसला नहीं है, बट तुम्हारा जो स्टेटमेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैं वो लिख देता हूं. द टर्म एक्सेलरेशन थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन के यूनिट्स बनते हैं मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. और अहमद, मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा था उसके यूनिट्स चेक करो, न्यूटन्स थे. तो आइडिया तो गलत नहीं है, बट अगर आप होमोजेनिटी की टर्म्स में कंपेयर करोगे तो न्यूटन्स शुड नॉट गो विथ मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. So instead of the term acceleration due to gravity, Newton is more closely related with the name of a force. Consequently, weight seems to be a better choice. ठीक है? And Adam, your statement is correct. जी Adam, मैंने आपका statement read कर लिया है. So yes, your statement is correct. Okay, ये चीज erase कर दूं, arrows वगैरह रहने देता हूं. Now you know, once you have established the fact that the working over here is implying a gravitational force is an alternate name given to the weight of the object. So इसकी basis पर I'm sure you would agree, if you are asked to obtain a relationship between small g and capital G. For those of you जिनको नाम याद करना थोड़ा सा मुश्किल लगता हो, मैं एक दफा दोबारा से दोनों टर्म्स के नाम साइड बाय साइड लिख लूं. So small g from now onwards should be referred to by the term, याद रहे तो पूरा टर्म यूज कर लेना, gravitational field strength, and capital G should be represented by the term universal gravitational constant. So if you are asked to obtain a relationship between the term small g and the term capital G, so based on the above statement, we have established that gravitational force for the object placed on the surface of the earth amounts to the weight of the object. तो यार अगर मैं इसी फॉर्मूले के अंदर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करूं, तो I can replace gravitational force by the term Gmm upon r square, and I can replace the term weight simply by the term mg. So the mass will get cancelled out from both the sides, and the relationship between capital G and small g can be expressed as follows. Okay, so the intention was, how can we obtain a relationship between the gravitational field strength, small g, and the universal gravitational constant, capital G. So this is the final outcome. दो steps की derivation है, mention कर दूं.
डेरिवेशन याद रखिएगा. Now, इसके अंदर यार, if you are ever asked, okay, what does capital M represent? So I'm sure you would agree. In the above example, capital M was basically the mass of the Earth. But in general terms, capital M refers to source mass, where source mass is defined as the mass which is capable of exerting the gravitational field. Riha, I just read your statement. Yes, your statement is correct. Um, Kanza, capital R, strictly speaking, refers to the radius of the Earth. Small r can refer to any distance. So capital R, strictly speaking, for the radius of the Earth, and small r, general term that can be used to refer to any distance. ठीक है? All right. Huzaifa ने लिखा हुआ है, so basically the mass which is causing the gravitational field. Yes, your statement is correct. If you want to use the term, you can use the term mass which is causing the gravitational field, although a better wording would be mass which is capable of exerting the gravitational field. But the idea is right. ठीक है. अब on the basis of this result, जो further आगे working करनी है on the basis of this result, graph to show how gravitational field strength G varies with the distance as we move further away from the surface of the Earth. So based on the equation that we have established, how can we compile a graph which can show, okay, Reha, yes, the source mass is going to be the bigger mass, but Reha, the term bigger mass suit nahi karta, and hence the term bigger mass is generally replaced by the term source mass. So usually gravitation में bigger का term इस्तेमाल नहीं करते because bigger is kind of a relative term. So the kind of term source mass is a better replacement as opposed to the term bigger mass. But the idea is correct. Okay, so graph to show how the gravitational field strength varies with the distance as we move further away
from the surface of the earth. तो once again पहले एक diagrammatic approach देख लो, इसके बाद इसका ग्राफ बना देते हैं. ठीक है, तो सोर्स मास हो गया, फॉर एग्जांपल अर्थ हो गया. I'll need the space, तो मैं अर्थ वगैरह की लेबलिंग साइड पे कर दूं. Okay, so there is an object positioned on the surface of the earth, and based on the wording, the arrow indicates that the object is moved further away from the surface of the earth. ठीक है, तो just a diagrammatic representation showing that an object is positioned on the earth's surface. Object के mass को small m लिख देता हूं in case if I need it. And the green arrow pointing outwards implies that the object is moved further away from the surface of the earth. So how would the shape of the graph look like? उसकी एक representation कर लेते हैं. I'm trying to compile the graph right below the diagram ताकि आप correlate कर लो. So the vertical axis represents gravitational field strength. जगह है तो पूरी wording लिख लूं. Okay, so the vertical axis represents gravitational field strength. The horizontal axis in this case represents distance from the earth. मैं एक्सिस पे लेबलिंग वगैरह कर दूं पहले. ठीक है, capital R over here represents the radius of the earth. And as the object continues to move further and further away, तो मैं एक्सिस को थोड़ा आगे तक लेबल कर रहा हूं. I think इतना काफी है. Now, based on the equation, let me write down the equation once again. You can all establish that the gravitational field strength appears to be inversely proportional to r square. पहले mathematical terms में देख लीजिएगा. And I guess you would also agree कि inverse proportionality kind of implies कि अगर आप r की वैल्यू को let's say डबल करोगे तो you would expect the value of g to reduce to 1/4. तो इसकी basis पर we should be able to make a fair bit of a diagram which will indicate how the strength of the gravitational field is varying as the distance continues to increase. So from the diagram मैं individual points को mark कर रहा हूं. अब जरा देख लीजिएगा, फिर ग्राफ की compilation कर लेता हूं. Let's go with maroon color. So on the surface of the earth you would agree कि आपकी g की value should be 9.81.
मैं वैल्यू लिखने के बजाय मैंने सरफेस ऑफ द अर्थ की वैल्यू को डिनोट कर दिया है बाय द टर्म जी नॉट। ब्रैकेट्स में अगर आपको मेंशन करना हो या वैसे अगर अलग से लिखना हो तो मैंने 9.8 की वैल्यू को भी इंडिकेट कर दिया है। सो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वी नो द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ which I am denoting by the term g naught is going to be 9.8. Now as the distance is going to get doubled, हमने ऑलरेडी स्टैब्लिश किया है कि डिस्टेंस के डबल होने के साथ साथ आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। सो डायग्राम की बेसिस पे आपका डिस्टेंस डबल हो जाएगा, तो आपकी जी की वैल्यू रिड्यूस करके 1/4 हो जाएगी। If I continue further and if the distance becomes 3r, तो ये वैल्यू फर्दर ड्रॉप डाउन कर जाएगी। So when the distance is 3r, you would expect the value of the gravitational field strength to reduce to 1/9 of its original value. तो ये एक और पॉइंट आ गया। And if you continue further, distance जब 4r हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल, तो वैल्यू आपकी फर्दर रिड्यूस डाउन करेगी। That should be 1/16 g naught. I think इतने पॉइंट्स काफी है for us to establish how the strength of the gravitational field varies. एक सेकेंड ना, थोड़ा सा डार्कन करके बना दूं। Purely in terms of mathematical concept, you would agree. You can also try and remember this graph as follows. As distance approaches infinity, the value of g approaches 0. ठीक है, so a diagrammatic representation implying how the strength of the gravitational field varies as we move further away from the surface of the earth. ठीक है, मैंने wordings भी साथ में mention कर दी है। As the distance approaches infinity, the value of g approaches 0. Now, one thing to recognize with regards to this diagram, let me just refer to this figure as figure 1. And follow the statement which I'm writing with regards to this figure. The graph shown in figure 1 is only valid if we were to assume that Earth behaves as an isolated body. That is, influence of other planetary bodies, ठीक है, moon etc.,
is not taken into account. ठीक है, so do recognize कि जो ग्राफ हमने बनाया है, that graph holds true so long as we assume that Earth is behaving as an isolated body. So the term Earth behaving as an isolated body basically implies that for the time being, influence of other celestial bodies or influence of other planetary bodies, moon and so on and so forth, for the time being is not taken into consideration. Let me continue with the statement. If, however, moon were to be taken into account, then the shape of the graph changes as illustrated in figure 2. Figure 2 अभी ड्रॉ कर लेता हूं. आप रोहिल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को भी काउंट कर लो, लेकिन रोहिल जनरली आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर नॉट मोर देन अ कपल ऑफ 1000 kilograms, तो उनका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर नहीं होता. तो मून फॉर एग्जांपल विल बी फार मोर इन्फ्लुएंशियल एज कंपेयर टू एनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो जनरली आपकी फ्यू थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम से ज्यादा मैसिव नहीं होती हैं. बट थ्योरेटिकली द आइडिया इज राइट. तो यार अब पहले मैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करूं, उसकी कैलकुलेशन करवाऊं, इसके बाद ग्राफ बना देता हूं. तो 3 काम मुझे करना है. So I'll start with a diagrammatic representation first, then the calculation, and finally the graph. So imagine if I were to extend this idea. पहले सिर्फ डायग्राम देख लीजिएगा. तो वंस अगेन आपके पास अर्थ आ गया. मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट है मून को अज्यूम करना. कॉन्सिक्वेंटली मैंने मून की ही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो कर दी है. डिटेल्स अभी प्रोवाइड कर दूंगा. नाउ आई एम श्योर यू वुड एग्री. Imagine if I were to place an object at the point labeled as A, and if I were to ask you, in which direction do you expect the object positioned at A to move, then surely you would all agree that the particle positioned at the point A will have a tendency to move towards the earth. तो मैंने एरो बना दिया. And the reason if asked, तो I guess सबसे sensible reason ये होगा कि the gravitational field strength of the earth at this point is stronger as compared to the gravitational field strength of the moon. ठीक है. So for a point labeled as A, मैं उमर आपका अभी स्टेटमेंट थोड़ी देर में रीड कर लेता हूं. मैं अपनी वर्किंग कंक्लूड कर दूं, फिर I'll move on to your statement. So as I was saying, a particle positioned at the point A will have a natural tendency of moving towards the earth, and the reason being that the gravitational field strength of the earth GE is greater as compared to the gravitational field strength of the moon. Likewise, imagine on another occasion, the same particle is now positioned at the point labeled as B. If asked, in which direction do you expect this particle to move? So surely अब होना चाहिए है कि this particle will have a tendency to move towards the right hand side, that is towards the moon. And the reasoning now would be that the gravitational field strength of the moon has now become stronger than that of the earth. Now similarly, imagine if there was a point positioned right in the middle
Let's label this as C. और C आपका मिड पॉइंट पे पोजिशनड है. I guess you would agree. Option should be कि C वाले particle will still have a tendency to go towards the Earth simply because Earth ज़्यादा massive है. So Earth की gravitational field is going to be more influential. So for C, which is positioned at the midpoint, you would still expect the particle to follow the trajectory towards the Earth, and the same reason. So now finally, imagine if I were to position a particle labeled somewhere in between C and B. I'm labeling the point as X. Now there is a possibility that if the particle positioned at X is left on its own, then there is a possibility. थोड़ा सा निब को थिन कर दूं फिर लिखना स्टार्ट करता हूं. Okay, so particle let me write down the wording somewhere close to the bottom of the page ताकि मैं मिडिल वाले पोर्शन पे ग्राफ बना दूं. तो वर्डिंग को बॉटम पे लिख रहा हूं. Particle at X might remain stationary. And I guess if you are asked to justify कि यार X वाले पॉइंट पे स्टेशनरी रहने की क्या जस्टिफिकेशन बनती है, you would all be in agreement that the gravitational field strength of the Earth balances out with the gravitational field strength of the Moon. शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो इस तरह से लिख दीजिएगा, GE is equal to GM. और टर्मिनोलॉजी यूज करनी हो, then this point labeled as X in gravitation can be referred to by the term null point. If asked to define कि null point को कैसे define करेंगे, definition भी नीचे लिख देता हूं. So null point is a point where you would expect the resultant gravitational field strength to be zero. G, the statement that Aisha suggested is correct. Gravitational field strength gets cancelled out. For that matter, जो हुजैफा ने लिखा हुआ था null point, वो wording भी सही है. कुलसुम ने लिखा हुआ है, sir, does that mean that distance affects the gravitation field? कुलसुम, मैं थोड़ा सा टॉप पे जाता हूं. तो आई थिंक ये ग्राफ यही शो कर रहा है कुलसुम कि yes, the distance does affect the gravitational field, because जितना आप अर्थ से दूर जाना शुरू करोगे, ये एक बहुत कॉमन नॉलेज है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी. ठीक है. सो कुलसुम, as far as your statement is concerned, does distance affect the gravitational field strength? So the answer is certainly yes, it does. उमर, मैं ग्राफ बना लूं, इसके बाद शायद तुम्हारा क्वेश्चन विल मेक मोर सेंस. सो लेट मी कंक्लूड विद द ग्राफ. और उसके बाद ये है कि मैं तुम्हारे क्वेश्चन में अगर तुम्हारी कोई कंफ्यूजन हो तो फिर उस पर पूछ देना once I'm done with the graph. Aisha, you're right. So this point is the Lagrangian point. ठीक है, where the gravitational field strength of one body balances out or nullifies the gravitational field strength of the other body. So anyways, coming back to the working that we were doing,
पहले मैं इस ग्राफ की लोकेशन कर लूं, तो वो आप जरा देख लीजिएगा कि यार ग्राफ का शेप कैसे बनेगा। मैं ग्राफ बना दूं उमर, तो आई थिंक फिर आपका जो क्वेश्चन है उसमें अगर कोई रेलिवेंट चीज आपको पूछनी हो तो आप दोबारा से स्टेट कर देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। सो हाउ वुड द शेप लुक लाइक, उसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं। एक सेकेंड ना, मैं जरा कलर चेंज कर दूं। सो दिस टाइम एक सेकेंड ना लेबलिंग कर दूं, फिर मैं स्टेटमेंट कंटिन्यू करता हूं। So this time around, the vertical axis over here is representing resultant gravitational field strength. आप रिजल्टेंट लिखना भूल जाओ तो इतना इशू नहीं है, लेकिन आई थिंक रिजल्टेंट का टर्म मेंशन करना मेक्स मोर सेंस बिकॉज वी आर डीलिंग विद टू बॉडीज एट द सेम टाइम। तो अगर याद रहे तो आप रिजल्टेंट का टर्म मेंशन कर दिया करो, यू आर बेटर ऑफ दैट वे। बट किसी वजह से अगर आप इग्नोर भी कर देते हो तो इशू नहीं है। तो सिंस वी आर डीलिंग विद टू ऑब्जेक्ट्स एट द सेम टाइम, द टर्म रिजल्टेंट काइंड ऑफ मेक्स मोर सेंस। ठीक है, मैंने उसके ऊपर ब्लू कलर की लाइन बना दी है। इट्स अप टू यू, प्रेफरेबली पूरा टर्म यूज कर लेना, किसी जगह मिस आउट कर दो तो कोई इशू नहीं है। एक सेकेंड ना, बिफोर आई कंटिन्यू लेट मी जस्ट चेंज माय पोजीशन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपके पास आ जाएगा। अगेन यार, हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपके डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हाउ वुड द शेप ऑफ द ग्राफ लुक लाइक, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। So on the surface of the earth, you would agree that the value should correspond to 9.81. तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। हुजैफा, मैं एक कैलकुलेशन बेटा करा दूं वंस आई एम डन विद द ग्राफ ना, फिर आपको 5 मिनट्स की ब्रेक दे दूंगा ताकि मेरा एक काम सीक्वेंस में बेटा कंप्लीट हो जाए। तो जस्ट वन कैलकुलेशन आफ्टर द ग्राफ, देन आई गिव यू अ 5 मिनट ब्रेक। Okay, so on the surface of the earth, 9.81, that's the first point. The point X on the diagram वर्डिंग्स प्लीज देखिएगा जो मैंने नीचे लिखी हुई है, अंडरलाइन कर रहा हूं कि null point was the point where the resultant gravitational field strength was 0. So on the basis of that, मैं डायग्राम कंपाइल कर रहा हूं। So the point which I'm marking right now will be the null point. Where the resultant gravitational field strength will be 0. दो पॉइंट्स आ गए। तो पहले ये वाला पोर्शन ग्राफ का कंपाइल कर लूं। अब मूविंग ऑन दी अदर साइड, तो अब मून की तरफ चले जाते हैं। तो यार मून की तरफ जाते हुए दो पॉसिबिलिटीज हैं ग्राफ्स की, मैं दोनों बना देता हूं। So on the right hand side of the null point, the gravitational field strength of the moon will start playing its role. So option 1 मैंने ड्रॉ कर दिया है with the blue marker over here, और इसके अगेंस्ट बिल्कुल सिमिलर ऑप्शन बना रहा हूं। इनफैक्ट बिल्कुल आइडेंटिकल है, जिस कंस्ट्रक्टेड नेगेटिव वाले एक्सिस के ऊपर, इसको ऑप्शन 2 कर दिया है।
So between the two options, for obvious reasons, although correct दोनों हैं, but do recognize that gravitational field strength is a vector quantity. तो अगर आप इस बात को appreciate करते हो कि यार gravitational field strength is a vector quantity, therefore direction counts. Hence, option 2 preferred over. ठीक है, तो अगर आप डायग्राम को देख लो तो आई थिंक आपको recognition मिल जाएगी कि since gravitational field strength is a vector quantity, so direction count करता है. Now what do I mean by the statement के direction count करता है? If you go back to the diagram, look carefully, मैंने directions mark किए थे. Let me highlight them with the highlighter. So I think अगर आप directions को देख रहे हैं तो please देख लीजिएगा, मैंने directions mark किए हुए थे. On the left hand side of the null point, my arrows were pointing to the left. On the left hand side of the null point, my arrows were pointing towards the earth. Let's put it this way. And on the right hand side of the null point, my arrow is pointing towards the moon. So when I say G is a vector quantity, direction matters. So I think diagram से आपको clearly नजर आ रहा होगा कि opposite directions हैं. Consequently, we would prefer graph 2 as opposed to graph 1. सही है. So मैं ये highlighter से जो मैंने बनाया है ना वो तो erase कर दूं. I don't think you need this. Wordings के अंदर इसको include कर दूंगा if needed. So direction counts, hence option 2 preferred over option 1. Wordings में ऐसे लिख देता हूं. Opposite direction, therefore graph constructed in the opposite quadrant. ठीक है, अगर 1 को आपको रहने देना है तो वो रहने दीजिएगा, लेकिन मैं इसको स्ट्राइक आउट कर देता हूं. And option 2 is preferred as opposed to option 1. सही. उमर, I think जो क्वेश्चन तुम पूछ रहे थे, I think the graph kind of explains that statement. So मैंने पूरा रीड नहीं किया, लेकिन I guess जरा acknowledge कर दो कि जो स्टेटमेंट तुमने लिखा हुआ था वो I guess the graph is kind of taking care of that. उमर भाई, हाँ यार, yes it matches with, सही है. ठीक है, अब एक वर्किंग मुझे और भी करनी है बिफोर आई गिव यू अ 5 minute ब्रेक, तो वो भी देख लेना. हाउ टू mathematically obtain the position of the null point. ठीक है, सो कर्व क्यों बनता है, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनती है, अहमद ने पूछा है. अहमद यही बता देता हूं, लेकिन फिर इसको इरेज कर दूंगा. मैं स्क्रॉल अप नहीं कर रहा. हमने अहमद जज किया था ना कि जी की रिलेशनशिप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो अहमद, इफ यू कैन एक्नॉलेज कि यार जी की रिलेशनशिप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो आई एम श्योर मैथ्स में तुमने पढ़ा हुआ होगा कि आर स्क्वायर इज कंसिडर्ड टू बी अ क्वाड्रेटिक फंक्शन.
And I guess the term quadratic explains why it's a curve and why not a straight line. So Ahmed bhai, if you are okay with that, all right. ये erase कर रहा हूँ. Okay, so यार how to mathematically obtain the position of the null point वो देख लेते हैं. मैं numbers वगैरह आपको दे देता हूँ. Once again assume कर लेते हैं कि आपके पास अर्थ गिवन है. सिंबल्स की फॉर्म में बस लिख रहा हूं. मून गिवन है. लेट्स आल्सो अज्यूम कि आपको टोटल डिस्टेंस गिवन है. ठीक है, मैंने टोटल डिस्टेंस अज्यूम किया हुआ है टू बी 50 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ. 50 RE. ठीक है, RE for the radius of the earth. So earth and moon are separated by a total distance of 50 RE, where RE refers to the radius of the earth. Okay, the question is asking us obtain in terms of RE the location of the null point given that mass of the earth is 81 times the mass of the moon. ठीक है, जरा सिंबल्स देख लीजिएगा. हाँ अली, जो स्टेटमेंट तुमने लिखा है मैं उसी से स्टार्ट करूंगा. पहले सिंबल्स देख लीजिएगा. सो द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून center to center is marked and labeled as 50 times the radius of the earth, 50 RE. And the question is asking us obtain in terms of RE the location of the null point given that mass of the earth is 81 times the mass of the moon. अगर मैं रफली नल पॉइंट की लोकेशन को डायग्राम पे शो करूं, so imagine the point X labeled on the diagram refers to null point. तो यार जो डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है ना, मैं ग्रीन मार्कर से शो कर रहा हूं. Let me call this distance as D. So this is the distance which the question expects me to find. And we know that at the point labeled as X, which is the null point, we know that the Earth's gravitational field must balance out with the moon's gravitational field. तो अगर आप वर्किंग इस तरह से स्टार्ट करते हो कि at X, which is the null point, the gravitational field strength of Earth must balance out with the gravitational field strength of the moon. अब बस साइड लाइन के ऊपर बेसिक फॉर्मूला पहले लिख लूं. तो हमने फॉर्मूला ये लिखा हुआ था, जो बेसिक फॉर्मूला था, G is equal to GM upon R square. अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है. कैसे वो देख लीजिएगा. अर्थ के लिए कैसे लिखूंगा पहले प्लीज देखिएगा. सिंबल्स प्लीज देख लें. तो अर्थ के लिए आपका ये रिजल्ट बनेगा. तो जो फॉर्मूला था ना, मैंने उसको सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई कर दिया है. वो आप देख लीजिएगा कि मैंने सिंबल्स में क्या चेंजेस करी हैं.
ठीक है, so for the earth, that's the one shown with the blue marker. Sorry. तो अर्थ का रिजल्ट मैंने लिख दिया है, आप डायग्राम के साथ को रिलेट करके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस को फॉलो कर लीजिएगा. रिहा, एक्चुअली तुम्हें लिखा हुआ है स्टिल हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1 किलोग्राम. यस एंड नो. देखो क्यों कह रहा हूं यस एंड नो, बिकॉज रिहा, जिस फॉर्मूले पे मैंने जूम किया नोट करो. रिहा, इसमें स्मॉल एम तो आता ही नहीं है. टॉप पर से देखो कैंसिल हो गया था. तो रेहा, whether I assume the mass to be 1 kg or I assume the mass to be m kg or any value, the fact that it gets cancelled out, as you can see, so it will hardly have any influence on my working. Yes, you are right, Reha. पहले हमने 1 kg ही assume किया हुआ था. But can you realize the mass is getting cancelled? So what difference will it make whether the mass is 5 kg or 1 kg or 2 kg or whatever? Because eventually तो small m ने cancel out हो जाना है. So if you still want to assume the difference would be that, okay, Reha, maybe you are confusing the two formulas with each other. I am using the formula for gravitational field strength, G. And maybe you are talking about the formula of gravitational force. So remember, gravitational force के अंदर small m आता था. उसके अंदर you may very well assume the value of m to be 1 kg. No issues with that. But the formula which I am using, small g, इसमें तो रेहा m आता ही नहीं है. So it hardly makes any difference कि मैंने m को क्या assume किया हुआ है, at least in my formula of small g. Shurya, मैं वापस repeat कर रहा हूँ कि the formula which I am using is the formula for gravitational field strength. This formula does not depend upon the mass of the object because the small m got cancelled out during the derivation. So अगर आप ये वाला formula use कर रहे हो, तो it hardly matters कि मैं mass of the object को क्या assume करता हूँ. So still if you want to assume it to be 1 kg, it's fine. But any mass would do because the fact that it gets cancels out doesn't really make much of a difference. Sure, Reha. All right, so coming back to the working. So for the earth we said कि यार मेरा फॉर्मूला जो है ना वो ट्रांसफॉर्म करके अर्थ के लिए ये बन जाएगा. तो ये हाफ ऑफ द रिजल्ट तो ये आ गया. मून के लिए भी इसके साइड बाय साइड लिख लेता हूँ, इसके बाद इक्वेट कर दूंगा. अगेन जरा डायग्राम से देख लीजिएगा कि मून के लिए मेरे पास क्या रिजल्ट बनेगा और सिंबल्स भी फॉलो कर लीजिएगा. तो अगेन आई एम यूजिंग द सेम फॉर्मूला. Only this time I'll make minor adjustments to signify कि मैं मून के लिए फॉर्मूला बना रहा हूँ. तो आप सिंबल जरा देख लीजिएगा. अच्छा, आई गेस डिस्टेंस आप लोगों को डायग्राम पे से मेरा ख्याल है आइडिया हो जाएगा. मैं मार्क भी कर देता हूँ डिस्टेंस को. So the distance which I'm marking right now should be 50 RE minus D. आप जरा ब्लैक वाले डिस्टेंस को प्लीज फॉलो कर लीजिएगा.
ठीक है, मैं टैप कर रहा हूँ, आपको नजर आ जाएगा कि मैं किस वाली वैल्यू की तरफ इंडिकेट कर रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आई डोंट हैव मच स्पेस कि मैं वहां कुछ लिख सकूं। तो 50 RE माइनस डी, मैंने स्क्रीन को टैप किया तो आई थिंक आप रिलेट कर सकते हो आई एम रेफरिंग टू विच वैल्यू। सो लगा देते हैं डिस्टेंस को। ठीक है, तो मैंने साइडलाइन के अंदर बेसिक फॉर्मूला लिखा हुआ था, द वन शोन विद द रेड मार्कर, व्हिच वाज एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ. Then with the blue marker, I've shown how the formula should be applied in case of Earth. And with the orange marker, you can see how the formula can be applied in case of Moon. Of the fact that the gravitational field strength must be equal. तो दोनों आंसर्स को इक्वेट कर देते हैं यार। ये हो जाएगा। ओके, मैंने किसी का स्टेटमेंट तो कुछ मिस आउट नहीं किया है। कंजा कंजा ने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ स्मॉल जी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। This is gravitational force, and when gravitational force is divided by the mass of the object, you get the quantity small g, which is gravitational field strength. So, Kanza, the statement that you were asking, what is the difference between the gravitational force and the gravitational field strength? So, let me repeat the statement. Gravitational force, the one shown with the red marker, when divided by the mass of the object, gives a value for the gravitational field strength. सो कंजा पहले आप एक्नॉलेज कर दो ताकि फिर मैं आगे प्रोसीड कर जाऊं। बाकी आई गेस अली असगर ने तो कोई बस जनरल सजेशन दिया था। उमर ने 50 RE माइनस डी लिखा था, दैट वाज करेक्ट। ठीक है, तो यार मैं ये चीजें इरेज आउट यहां से कर लूं। आप क्वेश्चन से नंबर्स प्लीज देख लीजिएगा, मुझे अभी नेक्स्ट स्टेप में रिप्लेस करने पड़ेंगे। Has anyone watched a TV show by the name of The Wire? It's a 2002 series, 5 seasons or something. कैसा है अली? मुझे स्कूल के बच्चे कह रहे थे कि सर ये बहुत अंत है, बहुत अच्छा, ओके, ऑसम है, सही है। ओ आयशा, यू हैव आल्सो वॉच्ड इट, ओके। चलो मैं ट्राई करूंगा। हाउ इज द पेस, एज इन के मॉडरेट पेस है ना, बहुत स्लो पेस तो नहीं है आयशा? ओके, सही है। आई ट्राई टू स्क्वीज इन अ फ्यू एपिसोड्स नाउ। यार जो
मास का रेशियो है ना, ये क्वेश्चन में जरा प्लीज आप लोग रीड कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो यार ये मास का रेशियो मैंने डायग्राम के अंदर, जरा प्लीज रीड कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा टॉप के ऊपर। 81 की वैल्यू मैंने आपको प्रोवाइड करी थी। ब्लू हाईलाइटेड के साथ आपको टॉप पे नजर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार। सॉल्व यार, तुम लोग जरा हिम्मत पकड़ो। और नल पॉइंट का लोकेशन क्या आता है? कुछ आ रहा हो तो यार जरा मुझे सजेशन दे दो, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह नहीं किया। फॉर एनी वन ऑफ यू हु इज वर्किंग इट आउट, जरा कंफर्म कर लेना। आई गेस शायद ये आंसर आ जाएगा। So if I go back to the original diagram, just so that I can write this value if needed. See in the original diagram, the value of D, ठीक है, after solving, works out to be, I guess ये आ रही है। Let me just reconfirm, किसी ने text तो किया होगा। Yes sir, the answer is for 45 RE, सही है। Okay, सही है। मुझे लगता है मैंने किसी एक दो स्टूडेंट्स का कोई मैसेज शायद मिस आउट किया था। लेट मी जस्ट क्विकली रिव्यू दैट। आई टेक अ 5 मिनट ब्रेक। नहीं, आई गेस मैंने आंसर कर दिए थे सारे। Shiza is saying we weren't even born then. Nonetheless, I guess I've heard a lot about this show, never had the opportunity to watch it, but I'm sure अच्छा होगा। ओके यार, जस्ट गिव मी अ 5 मिनट ब्रेक, मैं आता हूँ फिर आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ यार। What's my favorite show? Yeah, there was this trial about the O.J. Simpson. So that happened when I was in my O levels. So I kind of relate to that. I don't remember the name of the show. It's on Netflix. I guess it's on Netflix, Aisha, but I don't remember the name of the show. It's American Crime Story or something. Acha, yeah, The Wire is not on Netflix. Yeah. Why can you relate to the trial here? Everything was happening in front of us. So every CNN was the only channel that we used to have those days. There was only PTV and there was only CNN, and that's about it. If you're not watching PTV, you inevitably are going to watch CNN. No BBC, no Fox, nothing. And CNN के ऊपर 24/7 it was O.J. Simpson की कहानी चल रही होती थी. So every bit and pieces के अंदर the entire trial that was going on, वो kind of, you can relate to it. तो मुझे इसलिए वो show अच्छा लगा था. Yeah, the name of the show is People versus O.J. Simpson. Ali rightly mentioned, हाँ. नहीं नहीं, क्लास ओवर बिल्कुल नहीं है रिया, मुझे भी एक वर्किंग करानी है। I've just taken a 5 minutes break for smoking, फिर अभी स्टार्ट करता हूँ रिया। हाँ अली, you're right. It's People versus O.J. Simpson. O.J. Simpson, हाँ.
A few weeks back, I started watching that German show by the name of Dark. यार वो बहुत tough है. It's just too tough to understand. मेरा दिमाग out हो गया. The story just keeps on going back and forth, back and forth. It's a very good show, but it's very messed up considering that you have to keep the total sequence. Yes, Adam, you're right. You just have to follow. मेरे साथ ये होता है कि I watch one episode, then I take a break of 5 days, and then I go back to watch the second episode. And that show is not that kind कि आप बीच में 5 days का break ले लो. It's like कि आपको one go में finish करना है. Because by the time मैं 5 days का break लेता हूँ, I just couldn't figure out the hang of the story कि मैंने पहले क्या देखा था. और वो recap करने में मेरा सारा time निकल जाता है. So वो I guess that is not the kind of show जो आप if you have to watch it, you have to watch it in one go. Otherwise that show doesn't make sense. All right. So I guess थोड़ा सा काम मैं और भी करा सकता हूँ अभी before I conclude with the class. So एक working और करनी है. Basically a few definitions to work around with. So the first thing is how do we define the term gravitational field? यार ये definitions बहुत 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 frequently आती हैं. इनको kind of learn कर लेना. Region in which a mass experiences a force of attraction. अच्छा, second चीज, if they ask you to define the term gravitational field strength, ठीक है, the names do appear to be similar, but the definition is kind of different. Gravitational field strength, mind you, is G. So based on the formula, use the formula to obtain the definition. ठीक है, so gravitational field strength is G. So based on the formula, your definition would be force of attraction experienced by a unit mass. अच्छा, इसकी यूनिट भी मेंशन कर दूं तो ओ लेवल्स के अंदर आप लोग यूनिट्स यूज करते थे मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, एंड बेस्ड ऑन द अबव फॉर्मूला द ऑल्टरनेट यूनिट्स कैन इवन बी न्यूटन पर किलोग्राम. अच्छा, तीसरी चीज, हाउ टू कंस्ट्रक्ट gravitational field lines. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन का भी थोड़ा सा आइडिया दे दूं. रिमेंबर ओ लेवल्स के अंदर you were taught how to construct electric field lines. ठीक है, and for those of you जिनको याद नहीं है, so remember electric field lines ऐसे बनाते थे. For a positive charge, the electric field lines were shown to be pointing outwards.
And for a negative charge, the electric field lines were shown to be pointing radially inwards. So just like the way we used to construct electric field lines, बिल्कुल same idea use करके if you are asked, we can construct gravitational field lines. तो पहले मैं स्टेटमेंट लिख दूं, इसके बाद कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं. स्टेटमेंट पहले फॉलो कर लेना. Since gravitational field is of an attractive nature, therefore field lines point radially inwards. Sorry, that is towards the source mass. So as an example, if you are given a source mass, and if you are asked to construct gravitational field lines around the source mass, so since masses only attract each other, or alternately you can say that since gravitational field is only of an attractive nature, therefore arrows will always only point inwards. Arrows only point inwards. ठीक है. ऑलराइट, आई गेस इस वाले पॉइंट पे आज कंक्लूड करता हूं. और थ्योरी की 2 क्लासेस एडम्स की और भी हैं. और यार अभी इसको अपलोड कर दूंगा, सो 5 मिनट्स रुक जाइएगा. मैं लेक्चर को अभी ही वंस आई एम डन विद द 5-10 मिनट्स में अपलोड कर देता हूं, तो बाद में आप लोग रिव्यू कर लेना. हाँ, सैटरडे तक काफी हो जाएगा आयशा. अच्छा रेहा, यू आर आस्किंग मी सम क्वेश्चन ना. ठीक है गाइज, मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ. सो टेक केयर और इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. सो रेहा, यू आर आस्किंग सम क्वेश्चन, वो पीछे रह गया था. सो जस्ट लेट मी नो. यू आर वेलकम ईमान. ओके सर, आई गॉट इट. ठीक है यार. ऑलराइट गाइस, तो यार यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ, लेक्चर अभी अपलोड कर दूंगा. ठीक है, थैंक यू यार. टेक केयर, खुदा हाफिज बेटा.